Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. Okay, so I hope you all have gone through the questions which have been posted on the group. So, okay, great. So today's question is, in public services, sometimes we are faced with the clash when self-interest comes in the way of professional duties. How do you think you can solve such issues? So this question, tell me like what this question is all about. What is the theme of the question? Conflict of interest. Integrity. Yes. Conflict of interest. So what is going to be the introduction? What do you think we are going to write the introduction? Defining public service. Define Public service. public service. Why? There is a conflict between self-interest and discharge of professional duties. First, we have to define the meaning of public service. Okay. Anyone else? Sir, can we start with the recommendations of Nolan Committee? Like Nolan Committee provided some foundational values such as openness, accountability, to prevent the abuse of power by bureaucrats. What else? Okay, guys. So in introduction, first we have to basically start with the definition of conflict of interest. Okay, definition of conflict of interest ka matlab, like how you are going to define it. It is a situation when, what do you think you can write? When there is a clash between a person's public duty and private interest. Apart from this, what do you think you need to write in the introduction itself? Also supposed to write कि अगर फिंटा है, ठीक है, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है. तो दैट बेसिकली, जैसे मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि सिग्निफिकेंस भी हाईलाइट करना होता है. नॉट ओनली द डेफिनेशन इज गोइंग टू सफाइस द रिक्वायरमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस, व्हाट वी कैन राइट इन दिस, that conflict of interest reduces what? Public trust and integrity, confidence in the
integrity and impartiality of public functionaries. So this will be the introduction कि जहां पे हमने conflict of interest को भी define कर दिया है, and along with that we have also stated that conflict of interest reduces public trust and confidence in the integrity and impartiality of public functionaries basically. ठीक है, ये लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको? बेसिकली जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो जो पब्लिक फंक्शनरीज होती हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है? वहां उनमें इंटीग्रिटी इम्पार्शियलिटी की एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट यू आर लाइक हाउ यू आर गोइंग टू राइट द बॉडी. व्हाट डू यू थिंक यू नीड टू बी द सब हेडिंग्स इन द बॉडी? For arising of conflict of interest. What will be the theme you are going to address in this? First of all, yes. reasons why these conflict of interest are arising, and then next subheading be that how we can overcome these difficulties and reasons. Yes. So why, basically, why conflict of interest arises? Yeah, because you can say the nature of work due to which conflict of interest develops. So this, now tell me points one by one. What do you think what is the first most important point? Sir, Conflict of interest. So bureaucrats has become directly yes. accountable to the citizen customers. They, like, in the sense, providing the delivery of services to the citizens. So they have some kind of discretionary powers, and so like laid down of principles are essentials to prevent the abuse of power. No, how does it justify कि वहां पे conflict of interest develop होगा? Sir, honesty versus efficiency. Honesty versus efficiency. Example दीजिए. What is the example? How are you going to justify this? Honesty versus efficiency. Guys, in ethics paper, you have to make sure you have examples. आप सब headings कुछ भी दे दो, थोड़ी बहुत relevant हो चलेगा, but example से justify करना, it is your responsibility. So honesty versus efficiency, वहां पे conflict of interest कैसे, I'm not able to understand how we are going to link this. Yes, बहुत सारी चीजें हैं. Just imagine yourself, you are being posted as a IAS, IPS officer, or maybe in the private sector as well, because the conflict of interest is not only the problem in the government sector, right? It is also a problem in the private sector as well. When you you are appointed as a board of directors. Important point which you should always remember is, the first point is basically the personal and professional interest. इसकी वजह से ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है. अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट, इसका एग्जांपल. Yes, tell me the example.
So suppose someone who is posted in the pollution department and any industries doing pollution, they are bribing them, then it's personal interest or the professional interest, like bribing in lieu of doing following the rules and regulations. हाँ, that can be added as example. ठीक है, कि जहाँ पे कोई जैसे अब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, so basically it is not the police, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, they are supposed to look after all these issues, right? But हाँ, कुछ इंडस्ट्री को वो exemptions दे दे in the lieu of or in return of any gift or any monetary benefits. So it is basically going to create a conflict कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज फॉलो करे या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मेंटेन करे. ठीक है, तो ये चीज होती है. अब सिमिलरली इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को देखने में मिलता है वो होता है जब बिडिंग होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट की. ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है कि अब सपोज जो बिडिंग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है, ठीक है, जैसे आप डीएम हो कहीं के, मतलब यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज अ आईएएस ऑफिसर और आप प्रमोट होके सेक्रेटरी लेवल पे चले गए, तो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको वो करना है, किसी को देना है, सपोज रोड के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कैनाल्स, राइट. अब इनमें ही कोई बिडर जो है, जो बिडिंग करने आया बिडर है जो, वो आपका फैमिली रिलेटिव निकल गया. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू बैलेंस, नाउ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल कम कि आपका यहाँ पे एक पर्सनल मैटर भी है और प्रोफेशनल मैटर भी है कि प्रोफेशनल में आपको कॉन्ट्रैक्ट तो देना है किसी को, but to whom you are going to give it, like to whom you are going to give the more priority. तो यहाँ पे actual conflict of interest आएगा when it comes to the public servant, in charge of giving out the contracts, and your relative is one of the bidder. So this is one thing. So this is personal and professional. Now what is the second point we can write? So conflicting responsibilities, like between like regular responsibility and some additional charge is also given. If तो वहां पे conflict of interest कैसे आएगा? Sir, maybe the person is not want to do the additional duty. नहीं, तो देखो वहां पे तो रिलक्टेंट नेचर आ जाएगा या ओवरबर्डन की भी चीजें आ सकती है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? देखो, ड्रिवन बाय इमोशंस. हाँ, इमोशंस को हम नहीं बोल सकते, कंसाइंस बोल सकते हैं. कंसाइंस बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे conflict due to person's conscience. कैसे इसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल्स दो. For example, shooting a person in encounter may be against one's conscience. कि आपको ऑर्डर मिले हैं कि भाई इनकाउंटर कर दो आप, बट killing someone, right? Killing someone is against my conscience. My conscience does not allow me to kill anyone, no matter whether it is an encounter or anything. But since I have got an order from my superior, so at any cost, like I have to fulfill my duty as well.
So now where the conflict of interest will come, whether I'm going to listen to my conscience or whether I'm going to follow my duties. So it is the not emotions, but you can say the person conscience. What could be the third point? Guys, just imagine yourself, you are being posted as an administrative officer. Like there are so many things. This is how you have to react. This is how the situation will come in right in front of you, even when you will be joining the services. And trust me, guys, जो conflict of interest है, it is not defined or it is not basically given anywhere. There is no code for this to resolve this conflict of interest. It is not codified basically, because there are so many situations where the conflict of interest can arise, can evolve. So due to moral values? Yes, due to moral values. Example? Examples though? Child marriage, sir. Child marriage. Like how? Moral values is definitely, it's a very good point. Morality एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे केसेस में आती है. Guys, देखो, suppose you are an administrator, ठीक है, and आपको orders दिए गए हैं to suppose जैसे कैसे एग्जांपल लूं मैं, जैसे कि if government has planned to acquire land to establish any infrastructure. It could be, school, any industry, ठीक है, in a forest area. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको वहां से निकाला जाए. ठीक है, फोर्सफुली उनको निकालो, चाहे आप उनको कन्विंस करके निकालो, बट यू हैव टू मेक श्योर द लैंड इज एक्वायर्ड एंड you have to make sure the people are displaced from that land. So here your moral values will come. For you, maybe this may not be the right decision. The displacement of tribal people from that land may not be morally right for you, because morally आपको लगता है कि that particular tribes, they are basically they are inhabiting in that particular forest for quite a long time. Now just to establish any industry, you are going to evacuate the place. This might not be the right choice for you. So यहाँ पे morality will come. तो आपका morality कुछ और बोल रहा होगा, but since you have got the order from your higher authorities, you also have to fulfill your duties. So here the conflict will again come. Now, what is the fourth point you can think? सर मोरालिटी में वॉर एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं. कौन सा? वॉर सर. वॉर का मतलब कैसे? सर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, जैसे अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है. हाँ, we can use that. लेकिन वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आएगा, वहां पे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आएगा. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू थिंक इंडियाज स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर is morally right?
तो यहाँ पे एथिकली बोल लो या मोरली बोल लो तो यहाँ पे ये चीज आएगी, लेकिन यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो वहां पे मोरालिटी का कंसेप्ट अलग हो जाएगा। वहां पे फिर दो टाइप, अगेन दोनों टाइप की आर्ग्यूमेंट आएगी। यस, इंडिया इज राइट, इंडिया इज रॉन्ग ऑल्सो। अगर किस सेंस में राइट है इंडिया, अगर इंडिया ने बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर में क्या किया है, एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, राइट। इवन उसने रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग चल रही थी उससे इंडिया ने क्या किया है, अपने आप को बैकआउट कर लिया है, राइट। तो अब ये पॉइंट किस में जाएगा, इंडिया इज मोरली रॉन्ग, बिकॉज वहां पे इतनी सारी किलिंग्स हो रही हैं, राइट, इतने लोगों की जानें जा रही हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इंडिया शुड हैव वोटेड अगेंस्ट द रशिया, ठीक है। तो इन दिस कंटेक्स्ट इंडिया इज रॉन्ग, बट इन अदर कंटेक्स्ट इंडिया इज राइट। क्यों इंडिया राइट है, टेल मी एनीवन। भाई इतना बड़ा मुद्दा है ये, तो कुछ समझ के ही तो इंडिया ने किया होगा ना, कि बस सोच लिया होगा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। Sir, because in international relation, the first thing is the personal interest of the country. So, नेशनल इंटरेस्ट, yes, sir. कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? Sir, because India has a very good defense relations and हाँ, so that's why. एग्जैक्टली exactly. तो नेशनल इंटरेस्ट में क्या है हमारे पास, जैसे आता है पॉवर्टी, ठीक है, हंगर, ये सब जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं। तो अब जो रशिया है वो बेसिकली क्या करता है, इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है बहुत ही सस्ते रेट में, एट ए वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि इंडिया और रशिया के बीच बहुत ही एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, जो बहुत ही पुराने मतलब विच इज वेरी ओल्ड, ठीक है। तो अगर इंडिया रशिया के अगेंस्ट में जाएगा तो इंडिया नीड सम अदर पार्टनर टू प्रोक्योर डिफेंस इक्विपमेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंडिया की जो फिस्कल कॉस्ट है इट विल इंक्रीज। जब इंडिया की फिस्कल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडिया विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द डोमेस्टिक इश्यूज लाइक पॉवर्टी, हंगर, सब्सिडीज एंड ऑल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको इंडिया रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इंडिया मोरली कहीं ना कहीं वो भी सही है कि भाई हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग पहले अपना डोमेस्टिक जो चीज प्रॉब्लम है उनको उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। सो ये एक अलग आर्ग्यूमेंट हो गई, तो मैं मुझे लगा ये चीज मैं बता देता हूं आपको। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस कि अब इसमें और क्या चीजें बची हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द अदर वेज थ्रू व्हिच द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन अराइज? So responsibility versus accountability. एग्जांपल दीजिए। For example, if a district DM's responsibility to make sure everyone in the district having Aadhaar card. Suppose if he fails to perform the task, he is held accountable for his lack of actions. Example? Examples like Aadhaar card, everyone having Aadhaar card in the district. If the actions, if his lack of actions, task is failure in nature. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आएगा? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ रहे हो आप कि उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट है और एक तरफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, उसके बीच में वो लाइक ही इज स्टक। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में बोथ आर बेसिकली इस चीज को जस्टिफाई करना इज बिट डिफिकल्ट। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट यू आर थिंकिंग बेसिकली। The other one is the profit versus social responsibility. Private institutions are more focusing towards profit. And social responsibility, they are not taking
care of the social responsibility in the employment generation. But how are you going to link with the services? Services को कैसे आप link करोगे? Like how you are going to define, like, okay, suppose his responsibility is to focus on the social welfare, right? हाँ sir. His responsibility is to focus on the social welfare. And accountability means to make sure whether that social welfare has been delivered or not. Where is the conflict here? So the private individuals and social values. To establish the accountability when that social welfare scheme or anything will get delivered or implemented, right? तो यहाँ पे conflict, personal conflict कहाँ पे आ रहा है? Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes. And the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar 1E Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. That is like difficult. तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं basically conflicting organization. How? Conflicting organization means what? Suppose if a public servant is also attached with NGOs, ठीक है, और welfare societies, अब यहां पे the conflict of interest may arise. How? Examples, can you cite any examples? Like environmental issues, someone, the government wants to mine, and due to environmental risk, like Peace Friends NGO and everything, they were saying that it's an protected area and it's bad for environment, Yes. but it was for national interest. Yes. Suppose government allowing mining, ठीक है, या और infrastructure projects in buffer zone. बफर जोन का मतलब समझ गए ना, जो बफर बायोस्फीयर में जो बफर जोन होता है, आउटर एरिया. तो बफर जोन में सपोज गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि माइनिंग इज अलाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर अलाउड, बट इफ सपोज यू आर अटैच्ड विद सम एनजीओज और एनी अदर वेलफेयर सोसाइटीज, so here the conflict of interest might come. You might not be convinced with the decision taken by the government in this regard. So here you again have to balance the responsibility, like the responsibilities, professional responsibilities, and your personal interest, and your obviously your personal interest is with the NGOs and the welfare societies working to protect the environment, basically.
What else? The last point. Religious. I'm sorry. Stereotypes and prejudices about anything. Stereotypes. Stereotypes. Stereotypes about anything. Your voice is not clear. Stereotypes and prejudices about anything. Example. Example, like if there is a project in a district and the district comprises of two kinds of people. One is language majority and it also comprises of the neighboring states people. They are in minority of the language. So it's not a better example. हाँ, तो उसमें हम लोग stereotypes about two religious bodies in a state. So if any event takes place, like the Udaipur case, if the public servant is stereotyped about a religious community about from just any event, then he might not favor that community even in the genuine cases. Yes, that point is also true. So उसको हम लोग बोल सकते हैं religious notions and customs. ठीक है, कि जो हमारे religious notions होते हैं, जो customs होते हैं. Suppose कि अगर मैं example दूं यहाँ पे कि suppose जैसे मैं example देख रहा था, you are a judge and you are opposing a gay marriage. तो आप अपने कंट्री में जहां हो, जहां मतलब आपके पर्सनल बिलीव्स हैं कि द गे मैरिज शुड नॉट बी लीगलाइज्ड, इट शुड नॉट बी लीगलाइज्ड, बट गवर्नमेंट इज फोर्सिंग यू टू लीगलाइज इट. तो यहां पे अब फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, जहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट तो ये बोलता है कस्टम के अकॉर्डिंग, बिकॉज यू आर ए स्टॉन्च बिलीवर ऑफ योर हिंदू कस्टम्स और योर रिलीजन, जहां पे गे मैरिजेस को लीगलाइज आप मतलब एक क्राइम हो गया आपके लिए. लेकिन अब गवर्नमेंट क्या है, सारी कंट्रीज लीगलाइज कर रही हैं गे मैरिजेस को. तो इफ यू थिंक दैट द गे मैरिजेस शुड बी लीगलाइज्ड, then in that case basically you will be in the dilemma whether you have to basically focus on your personal interest or the government order. So these are 5 examples which is more than enough to justify the demand of this question. The first, which is the nature of work due to which the conflict of interest arises. Now देखो guys, हमेशा ध्यान रखना ethics में no matter argument आप क्या लिखते हो, examples are most important to justify your stand. क्योंकि ethics में आपको ही पता है कि बहुत ethics में ethics भी है, morality भी है. ये इस चीज का कंसेप्ट मैंने समाचार वाणी में समझाया था आपको कि जब हम लोग ethics and morality पढ़ रहे थे abortion के केस में, ठीक है, तो इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है. आपको जस्टिफाई करना होता है. इसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप? ओनली थ्रू द एग्जांपल्स. ठीक है, तो ये सिंपल चीज है और आपके लाइफ में इस चीजें आती हैं. एग्जांपल भी लिया था. सपोज यू आर अ पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, आपको ड्यूटी दी है कि चेक द टू मेक श्योर दैट एवरी पर्सन राइडिंग बाइक should have a helmet, right? अब आपकी ड्यूटी लग गई रोड पे, आपने देखा कि कोई सिटीजन, कोई पर्सन अपनी माँ को लेके जा रहा है who is in a serious condition, ठीक है. In that case, now again the conflict will come कि morality आपकी क्या कहती है? You should allow that person so that her mother should get the treatment as soon as possible. But professional अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को देखते हो तो प्रोफेशनलिज्म आपको क्या करना चाहिए? You should arrest that person because he is not following the rules. So here the conflict will come. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके लाइफ में है. You just have to
make a tendency or make a habit of collecting it. No matter whether you are reading a newspaper, whether you are reading a magazine, plenty of examples you will find in the newspaper, but ask yourself how many examples you have collected or at least you have adhered to that example. आपने कितनी बार सोचा होगा कि हाँ यार ये ethics के लिए example मैं use कर सकता हूँ. And I'm damn sure every day you will find such examples in the Hindu, Indian Express, Times of India, everywhere. But problem ये होती है कि हम लोग उसको catch नहीं कर पाते, होती वो हमारी आंखों के सामने ही है. ठीक है, so this is one thing. Now, how you are going to solve this situation? Now tell me the points. Yes. So maintenance of objectivity, like rigorous data analysis when there is conflict. Ground level पे चीजें बताओ which can be like which is clear. Maintaining transparency. Maintaining transparency in what? Governance. Regarding the abuse of power. How you are going to do that? Deterrence against deterrence against abuse of power. I'm sorry. Deterrence against the abuse of power in governance. How? How are you going to do that? How it will decide you? How it is going to basically help you to decide what action you need should be taken? Analyzing the interests. For example, जैसे मैं एग्जांपल एक दे देता हूं कि the public interest should be always given priority over personal interest. This is one way कि जहां पे भी पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि हमने वो फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट रोल में आ रहा है, राइट? ठीक है, और तो वहां पे पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ. जैसे श्वेता ने एग्जांपल लिया था कि इंडस्ट्रीज का, पॉल्यूशन का, तो वहां पे पर्सनल इंटरेस्ट हम लोग बेसिकली वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट. So public interest should be given more priority over the personal interest. What is the second thing? Sir, इनमें examples नहीं लिखना. I'm sorry? In these cases, don't we have to write or mention the examples? Aditya, your voice is very low. I'm not able to hear you. Sir, I'm saying कि in cases में अपने को example नहीं लिखना. किसका example? Solving of conflict of interest. हर एक पॉइंट का एक एग्जांपल. हाँ बिल्कुल लिखना है उसमें. क्यों नहीं लिख सकते हो आप? नहीं, हम आस्किंग कि लिखना जरूरी है क्या? एग्जांपल जैसे हमने अभी वो ब्राइबिंग वाला किया, तो that is the example. The public interest should be always given priority over the personal interest. Now what next? Analyzing the interests of interests. For example, there is a situation, and if a public officer analyzes the interest by juxtaposing two situations, if I go with this path, then what would happen, and if I go with this path, then what would happen. Then if we just analyze the situation after choosing the path before taking the decision, that might help him solve or take a correct path. Increasing objectivity and critical thinking in decision making. Sir, like if
there is any conflict, we can back down from that situation, like bribing, like आप उसको, हम लोग contract उसको बोल सकते regarding. हैं वॉलंटरी डिस्क्लोजर, कि आप वॉलंटरीली डिस्क्लोज कर दो देयर इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल में बताओ, Case of contract, or like in Yes. case of any interview, like the interviewer may be the relative of the aspirant. So Yes. related to gift and travels. राइट। तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर में हम जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की थी कि जो बिडर है वो आपके खुद का फैमिली मेंबर है। So you should disclose this to the organization you are attached with, that one of my family member is also a bidder. So there might be a conflict of interest when I'm going to award this contract to my family member or maybe to someone else. So you should disclose this so that the organization or your authority can take a decision prior to the entire process even starts. So voluntarily disclosure is extremely important here. Now, what is the third point? Absenteeism. What does it mean? An example? Absenteeism का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वहां से आप एब्सेंट हो जाइए। एब्सेंट का मतलब ये नहीं है कि इन्फॉर्म्ड एब्सेंटिज्म आई एम ट्राइंग टू से। इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक जस्टिस सॉरी गाइस कपाड़िया। तो जस्टिस कपाड़िया ने क्या किया था, देयर वाज अ केस फाइल्ड अगेंस्ट हर डॉटर। ठीक है, केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हर डॉटर इन द सेम कोर्ट। तो बेसिकली जस्टिस कबाड़िया ने क्या किया, जस्टिस कबाड़िया स्टेप डाउन एज ए जज, क्योंकि यहां पे उनको लगा कि अगर मैं अपनी लड़की का ही केस जज करने बैठ जाऊंगा तो हियर माय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट might come between my duty and my personal interest. So what he did, he stepped down from the position of a judge. So this is a very excellent example. इस चीज का। What else? Any other point? Sir, Following ethical conduct. Political neutrality. Always maintain political neutrality. अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वो माइनिंग वाला केस देखा था। ठीक है, फॉरेस्ट में माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो देखा था, तो वहां पे ये सब जो मूव्स होते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, राइट? क्योंकि जो वहां पे माइनिंग कर रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा होगा, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा होगा, ही विल हैव सम पॉलिटिकल कनेक्शन। दैट इज द रीजन व्हाई ही गॉट द परमिशन टू स्टार्ट माइनिंग इन अ प्रोटेक्टेड एरिया, इन अ बफर जोन। तो यहाँ पे बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड नॉट बी पॉलिटिकली inclined, you have to maintain a politically neutral stand. आपको ये नहीं देखना है कि हाँ वो भले ही कितनी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है या वो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, इट शुड नॉट हैपन। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आजकल जो सबसे बड़ा इशू यही चल रहा है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का,
क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं दे आर आइदर इंक्लाइंड और दे लाइक, या तो वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे, डजंट मैटर आइडियोलॉजिकली, बट उसके पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेटेड टू हिज प्रमोशन हो सकता है, रिलेटेड टू हिज सेफ्टी हो सकती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. So he should not get indulged into these kind of activities. He should make sure his stand as far as the political parties are concerned is neutral. Any other point, guys? Sir, imminent threat. I'm sorry? Imminent threat. Eminent track. Threat, sir. Spell it. THREAT. Okay, eminent threat. Like how it will solve this? No, sir, solve this. That will be the point of conflict, sir. Okay, you are saying कि the administrator or the government official should calculate the eminent threat. That's what you are trying to say? No, sir. I'm saying the conflict of interest might come if he has to choose between like to save his family and to take bribe or just do some work which is not professionally or morally or any time correct in the eyes of law. So don't you think that will come under the first point itself we have discussed? The personal interest. That can be included, like it is a sub part of that only. So the last point, see guys, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ethics में आपको खाली you are not like individual working for the system. You also have to think how the system can be further improved. तो अभी तक हमने जो यहाँ पे सब चीजें की हैं वो क्या की हैं अपने लिए. What about your subordinates? भाई आप ऐसा काम करो ना कि जो आपके subordinates हैं they should also learn something from you. तो ये सब तो हम लोग अभी अपनी चीजें देख रहे थे. तो हम लोग subordinates के लिए at the system level what can be done? Also, can we mention the public impartiality? Like civil servant can ask the subordinates to ask the appropriate questions, no matter how grand the personality is. Like you can take the case of some grand or like big celebrities and all, like Iman Khan and all. देखिए इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप होना चाहिए, विच इज कल्चर का मतलब whenever the situation arises of conflict of interest, the best practices should be followed. जैसे हमने जस्टिस कपाड़िया का केस देखा, आपको नहीं लगता कि अगली बार से अगर इस टाइप के केसेस जुडिशरी में जाएंगे तो दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम द जस्टिस कपाड़िया कि यस बिकॉज he stepped down from his position, so it is our responsibility also now to step down from that position where the conflict of interest is going to come. तो इस टाइप की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, it has to be nurtured at the organization level so that your subordinate can learn from this. So again, these are all the 5 points we have discussed, which is more than enough. Okay. Now, at the end, what you are going to conclude? How are you going to conclude the answer? Yes.
कंक्लूजन में क्या लिखोगे गाइस? अपन कोई कोट नहीं लिख सकते कंक्लूजन में। नो कोट्स इन कंक्लूजन, नो कोट्स। तो कोट्स को कहाँ पे अपन फिट इन कर सकते हैं किसी भी आंसर? देखो इसमें हम सिंपल सा कंक्लूड कर सकते हैं। देखो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज बाउंड टू कम. Like everyone in this world is interconnected. My job, like if I'm individual, if I'm a public servant, I'm connected with my family, I'm connected with my friends, I'm connected with my system. So the conflict of interest is bound to come. But we have to make sure, even if there is a conflict of interest, it is the duty of individual. I'll just write it down. Okay. Like it is the duty of individual. आप उसके पहले ये भी लिख सकते हो कि in this world we are connected with our family, so conflict of interest bound to come or bound to arise, but it is the duty of individual to take the path of righteousness and ensure it is the duty of individual to take the path of righteousness and ensure his moral obligation on public officials requires that authority entrusted to them be exercised in public interest. This should be the conclusion for this. ठीक है, आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि in this world like we are connected with our family, friends, so the conflict of interest is bound to come or bound to arise, but it is a duty of individual to take the path of righteousness and ensure his moral obligation on public officials requires that authority entrusted to them be exercised in public interest. This part is extremely important. Authority entrusted to them, जो power है उसके पास, it should be exercised in the public interest, not personal interest. So this is what you should be writing as a concluding remark. Okay, guys. So this was the question, and see, this question was basically the reason I have asked this question because जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यूपीएससी अब हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने लग गया है. नो मैटर, आप देखो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एथिक्स के जो फाउंडेशन जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं पढ़ना है. आपको जो कीवर्ड्स होते हैं जो फाउंडेशनल कीवर्ड्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. जैसे मोरालिटी हो गया, एथिक्स हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, ये सब इसके बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. बट इस टाइप के ओपन एंडेड क्वेश्चन यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट
कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड पुट ए स्पेशल फोकस, बिकॉज अब यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, दैट इज फॉर श्योर। जहां पे आपकी नॉलेज नहीं, आपका कॉमन सेंस यूपीएससी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे इट इज ए प्योर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन कि आप ऑब्जर्व कितनी करते हो, आपके पास जो चीजें हैं, आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास जो गवर्नेंस में चीजें हो रही हैं, आप उनको ऑब्जर्व किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपने चीजों को लाइफ में गाइस ऑब्जर्व करना नहीं सीखा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड स्कोर either in the ethics paper or GS paper 1, 2, 3, like, or even the essay. So observation is the key. Observation बहुत जरूरी है, हर चीज को ऑब्जर्व करना सीखो। So this is even, you know, this is kind of habit I'm trying to develop, you know, among you guys, even in the Samachar Vani class. So when I'll be taking few section of few subjects in the EMP program also, I'll try to develop this kind of habit when I'll be asking you so many questions about the themes, about the various aspects for that particular topic. So gradually you will learn, but also in your real life, guys, try to follow this approach. Observe करना सीखो जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं. Okay, guys, so thank you so much for joining me, and I'm going to end this session. And do you have any other doubts, guys, related to the answer writing or the approach? Anything? Any problem are you guys facing? Okay, none. So, okay, guys, thank you so much. Then see you tomorrow with the next set of questions. Thank you for joining me. Take care. Thank you, sir. Thank you. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you.